Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on literary criticism, and today we will talk about Plato as a critic. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Good evening, Papri. Good evening, Cherry. Welcome. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And these are the timings of your classes. Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so let's start. Today we will talk about Plato's criticism. Okay, so the first important theory, Plato as a critic. This is the image of Plato you can see. A very important Greek philosopher and theorist also. So Plato, first of all, his introduction, Plato was an Athenian philosopher. He was born on 427 or 423 BC. दोनों ही अवेलेबल मतलब दोनों ही डेट्स अवेलेबल हैं. Died on 348 or 347 BC. There are confusions regarding the exact date of birth and death. तो दोनों के बीच में confusion है. 427, 423 and 348, 347. Good evening, Gitu. Welcome. And he established the school called Academy. Academy is a very famous institution established by Plato. Aristotle was his student. We will read Aristotle also tomorrow. So basically, in the field of criticism, Plato's major work is the Republic, which is written in the form of Socratic dialogue. ठीक है, तो रिपब्लिक वर्क है और उसके साथ साथ और भी कई वर्क है लाइक आयन एंड एक्सेट्रा. So Republic is the most famous, and basically Republic talks about justice and order in an ideal state. So in this particular book, The Republic, Plato is trying to create an ideal utopian society. Ideal utopian society where everything will be just, everything will be systematic. So he tries to create a particular rule or particular type of ideology which will be followed in his kingdom, that is Republic. And that is why he has given a series of instruction related to the poets and philosophers in this particular book. Good evening, Sumit. Welcome. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनके इम्पोर्टेंट थियोरी है, हाँ, प्लेटोनिज्म. तो उनके जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है एलिगोरी ऑफ द केव थ्योरी. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी. तो इट समटाइम्स अपीयर्स अ बिट कंफ्यूजिंग बट इट हैज अ गुड स्टोरी. ओके, एलिगोरी ऑफ द केव थ्योरी दैट इज आल्सो इन द रिपब्लिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टोरी क्या है, इसके पीछे एक स्टोरी है. ठीक है, presented in the Republic, and this particular theory is written as a dialogue between Glaucon and Socrates. So basically Republic is written in the form of dialogue. Okay, Republic is written in the form of dialogue, and very interestingly, this is probably the first critical work which is written in dialogue form. Generally in criticism, we often see that the criticism is written in the form of argument, but यहाँ पर dialogue के form में लिखा है, तो एक dramatic चीजें यहाँ पर आ जाती है. Good evening, Manju. Welcome. So presented in the Republic, written as a dialogue between Glaucon and Socrates. So original theory given by Socrates. मतलब Socrates बता रहे हैं Glaucon को. तो थ्योरी क्या है, इसके पीछे एक स्टोरी है, एलिगरी ऑफ द केव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी को समझ लो, देन आई विल शो यू एन इमेज, एंड थ्रू दैट इमेज वी विल अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी. ओके, सो स्टोरी कुछ ऐसा है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल आर इम्प्रिजन्ड इनसाइड अ केव. Okay, they are imprisoned inside a cave.
Now they are sitting facing the wall of the cave. They are tied together with each other and they are sitting facing the wall of the cave. They are chained so they cannot move properly. Okay. Behind them is a fire and the cave is separated into two parts by a wall. Okay. Behind them is a fire and the cave is separated into two parts by a wall in between. Yes. Okay. So a group of people are walking with various objects behind the wall. They are walking and their shadows are reflecting on the front wall of the prisoners, so they can only see the shadows. Okay. Now, one of the prisoners somehow manages to escape. When he comes out, he sees the sunlight and he tries to make other understand the reality, but the other people consider him as madman. Good evening, Shomo. Welcome. Yes, the effect of education and the lack of it on our nature. Absolutely, Cherry. Effect of education and knowledge. That is the main point. So, ये है basically story. One philosopher, one prisoner has managed to escape from that cave, and he is trying to show them the reality, but they consider him as madman. Yes, it is the theory of forms, right? तो अब देखो इस इमेज से आपको पता चल जाएगा क्या है. ठीक है. So this is the image of allegory of the cave. The image is available in Wikipedia also. ठीक है. तो देखो आप डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया, this is the cave you can see. ठीक है. This is the wall which separates the cave into two parts. This is one part, this is another part. Okay. They are the prisoners sitting. ठीक है. तो वो सामने क्या देख रहा है? This is one wall, फर्स्ट वॉल एंड दिस इज सेकेंड वॉल. ठीक है. तो फर्स्ट वॉल में वो क्या देख रहे हैं? दे आर सीइंग द शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर देखो कुछ लोग मतलब पहरा दे रहा है इन लोगों को, तो इसका शैडो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका शैडो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर ड्यू टू दिस फायर. Okay, due to this fire, the shadow is reflecting. And this is one prisoner who has escaped from the chain and he has come out. So this is the world outside the cave. ठीक है. तो वो बाहर आकर क्या देख रहे हैं? He is seeing the sunlight, he is seeing the whole world with trees, ocean. Okay. Now he is going back to them and telling that no, these shadows are not the reality, this is the reality. But they don't want to consider him, and they are actually saying that your eyes are blinded by the sunlight, so you are saying wrong things. Okay. Yes. तो हाँ, तो ये है. तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? ये तो स्टोरी है. ठीक है. तो देखो क्या इम्प्लीकेशन है. तो दोनों वर्ल्ड प्लेटो इज टॉकिंग अबाउट टू वर्ल्ड्स. वन इज द रियल वर्ल्ड एंड अनदर इज द कॉपी ऑफ द रियल. So this is very closely associated with Jean Baudrillard concept of simulacra and simulation. मैंने आपको ये बताया था, simulacra and simulation, right? So and also hyperreal. So this is basically associated with this idea. मतलब Baudrillard's concept is associated with this idea. So inside the cave and outside the cave, two separate worlds. You can see this is the border. Two separate worlds. This is inside the cave and this is outside the cave. So outside the cave, that is the real. That is the real. And inside the cave, it is the copy of the real. Inside the cave is the copy of the real. Now, who are these prisoners? These prisoners are the common people. We, the common people who have no knowledge of deeper philosophy or who are unaware of the truth. Okay. So the prisoners or the common folk, the prisoners or the common folk, they are believing those things which they are seeing in front of them. So the shadows appear as real to them, and basically these prisoners, they are spending their time inside the cave from their birth, since their birth. Okay, so that is why they do not know what is sunlight, how the world looks outside, is it different from the inside world or not? They have no idea. So whatever they are seeing since their childhood in this particular cave, they are believing it as reality. So these shadows, they appear as reality to them.
They are considering that these shadows are the real people. So basically it is the copy of the real, right? It is the copy of the real, but they are believing that okay, it is reality. Okay, now the man who escapes, अब जो बाहर आ रहे हैं उस प्रिजनर के ग्रुप से, he is the philosopher. तो फिलोसोफर का क्या काम है? टू ब्रिंग लाइट, एज चेरी हैज सेड कि इट इज टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड द लैक ऑफ इट ऑन आवर नेचर. एब्सोल्युटली राइट. So it is talking about philosophy, knowledge. Okay, so philosopher is the man who escapes, and the sunlight is basically the true source of knowledge or education, जो भी कहो, true source of knowledge or education. Now this fire, what does this fire indicate? Fire actually human made. Okay, so fire is a human made light and it refers to the artists. ठीक है, so artist क्या करते हैं? Artist makes copy of the real. जो we will discuss Plato's theory of poetry also in this class in the next slide. So fire क्या करते हैं? Fire is a human made light. It is not natural and it symbolizes the artist. तो अब टोटल चीज का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? प्लेटो इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट दैट द रियल वर्ल्ड व्हिच वी आर एक्चुअली सीइंग, इट इज नॉट द रियलिटी, इट इज द कॉपी ऑफ द रियल. रिमेंबर वी हैव रेड साइकोएनालिटिक थ्योरी एंड जैक लकान ने एक टर्म यूज किया था, ट्रॉमा ऑफ द रियल. ठीक है, यूज किया था ना, ट्रॉमा ऑफ द रियल. तो यहाँ पर भी मैंने सेम चीज आपको बताई थी, तो वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है. फ्रॉम साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव लकान इज सेइंग दैट, बट the main point is same, that what we are seeing, it is not the reality. So what is reality? It is a big question, and the absence of reality creates a trauma inside our mind. Similarly, Plato is also telling us that, Plato is saying that real world exists, yes. So real world can only be identified, can only be understood by the philosopher or the great knowledgeable person who has escaped from that common cook. ठीक है, एंड ऑल्सो फिलोसोफर हु इज अबव द एवरेज लेवल. ओके, तो बाकी जो कॉमन कुक, जो प्रिजनर्स बैठे हैं, वो तो वहां पर ही है, बट एक ऐसे पर्सन है जो बाहर आए. तो वही एक पर्सन जो कुछ ऐसा काम करता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, जरा हटके वो सोचता है. So that man is philosopher, and philosopher has the true source of knowledge. Philosopher can recognize that yes, sunlight is the true reality. The light which we are seeing inside the cave, it is fire. It is made by the artist. It is a copy of the real. So the true reality is outside. He is the philosopher. He understands everything. He has greater perspective, and he has broad mind. Okay, so philosopher is trying to give you the knowledge of reality, but what happens that we people often consider them as madmen, because we are often deceived unreal as the real, and the deception is so powerful. The hyper real appears to be real, and it is so concrete, so solid, that when the philosopher is trying to show us the true reality, we are rejecting him. We are saying that no, he is mad, his mind is bad, he is thinking in a different way, his thoughts are biased, so we should not accept him. तो वही सेम प्रिजनर जो अब अपनी दोस्तों को आकर ये बता रहे हैं कि भैया बाहर चलो, बाहर देखो, रियलिटी कुछ और है, तो वो कह रहा है कि यू आर ब्लाइंडेड बाय द सनलाइट, यू आर सीइंग नॉनसेंस, सो प्लीज सिट डाउन हियर एंड वॉच द शैडोज, दैट इज द रियलिटी. सो दैट इज वी, आवर कॉमन folk. We the common people often do that. We the common people are the followers of tradition, and we easily believe what we are seeing. But the philosopher has strong sense of logic. Philosopher has true education, so he can distinguish between the real and the hyper real, between the original reality and the copy of the reality, right? So only one philosopher can do that, but the society often rejects the philosopher. So education and lack of education in the society. Yes, absolutely. How humans perceive reality and the human existence. Absolutely right, Cherry. Yes, skepticism. Prisoners are common people, and who escapes the prison is an intellectual. Yes, absolutely.
So that is about allegory of the cave. It's a beautiful theory and beautiful analogy. ठीक है, तो इस इमेज को आप याद रखना, इमेज को याद रखना, आपको और कुछ नहीं याद रखना है. यू कैन ऑटोमेटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस. So just keep this image in your mind. This is also available in Wikipedia. Varieties images available है. आप देख सकते हो गूगल में सर्च करके allegory of cave images. ठीक है, तो कोई एक इमेज आप अच्छे से ध्यान में रखना, आप इजीली आंसर कर पाओ. ठीक है. गुड इवनिंग तुहिन, वेलकम. So that is about allegory of the cave. Now we will come on to Plato's theory of poetry. Plato's theory of poetry. Okay, so basically Plato is almost an enemy of the poets. Plato doesn't love poetry in that sense. Okay, actually bad poetry. Plato doesn't love bad poetry. So Plato criticizes poetry as a whole and prescribes to banish the poets from the republic. This is a very famous statement that Plato has said that I will banish poets from the republic. Why Plato is so much angry with the poets? Because he thinks that poetry has a demoralizing effect on human mind, because it shows the suffering of virtuous people and prosperity of wicked men. So basically it violates poetic justice. It violates poetic justice. ठीक है, तो प्लेटो इसलिए बहुत ही ज्यादा मतलब अगेंस्ट में है पोएट्री का, बिकॉज इन द रिपब्लिक, इफ यू रीड बुक 2 of the republic, you will find that Plato is saying that I want to create a group of people who will be the ideal citizens of the republic. So they must be brave, they must be strong, they must be good at warfare, they must have true knowledge, they must be educated. So true and ideal citizen he wants to create. But Plato thinks that science and other subjects are far better than poetry, because poetry is such an art form which is totally associated with emotion. And if a person reads poetry too much, he will be effeminate. Okay, and he will be too emotional. That is why his original self of a strong and military kind of attitude, that will be destroyed. So Plato thinks that poetry has a demoralizing effect. In that sense, it has demoralizing effect because it shows us something wrong in the society. It shows that the villain characters, they are the more glorious, and the virtuous people, they are suffering. So if that is shown, if that is taught to the children, then it will create a bad impact. Okay. Yes, yes, absolutely, Papri, absolutely right. Good evening, Jyoti, welcome. Poetry should be informing a truth. Yes, absolutely. Um, yes, yes, Papri, absolutely. We can never accept the reality. So when Copernicus told that no, Earth moves round the sun, we reject his argument, because traditionally we believe that sun is moving around the earth. Absolutely. ओके, तो गॉड्स, तो ये एक बात है. दूसरी बात क्या है कि प्लेटो इज सेइंग दैट इन पोएट्री, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रीक पोएट्री और एपिक पोएट्री, it has presented the gods as fighting with each other, plotting and doing immoral activities which will create bad impact on children. अब देखो, सोसाइटी तब भी लोगोसेंट्रिक था, तभी सोसाइटी लोगो सेंट्रिक था, तो जिसमें गॉड था एट द सेंटर, राइट. तो हम गॉड को मान रहे हैं द सुप्रीम ऑथोरिटी, गॉड इज द सेंटर, गॉड शुड बी द आइडियल ऑफ ऑल पीपल, एंड हम गॉड को बहुत ही ज्यादा डरते हैं. ठीक है, सो फियर ऑफ गॉड क्रिएट्स इन अस अ काइंड ऑफ मॉरलाइजिंग इम्पैक्ट. बट अगर गॉड को ही ऐसे दिखाया जाए कि गॉड्स themselves are plotting, they have jealousy, they have cruelty, they are fighting with each other, so Plato thinks that it will destroy people's belief on God, and it will be very much harmful for the republic. So basically the children, they must not read poems which are presenting God not as omnipotent, omniscient, omnipresent, but as a true plotter.
And that is why Plato says that I will exclude some of the passages of Homer, because Homer has shown these kind of things. Gods, they are engaged in sexual encounters, other Greek gods and goddesses. You have read it, ठीक है, लाइक ज्यूस, लाइक जो लेडा एंड द स्वान में है, तो इस टाइप का जो चीज है वो नहीं पढ़ाना है बच्चों, ठीक है, बिकॉज वी इट विल डिस्ट्रॉय आवर रेस्पेक्ट ऑन गॉड. एंड और क्या कारण है? द पोएट कंपोजेस पोएट्री इन अ फ्रेंजीड इमोशनल स्टेट. Yes, that's I have already told you. It will make people softer and emotional, and so they can never become bold and strong, ideal soldiers and ideal citizens. They will be effeminate. They will be crying. They will be emotional. I do not want such citizens for my republic. Okay, poetry and ये उनका मेजर चीज था कि मेजर कारण ये था कि पोएट्री इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. ठीक है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. द राइटर्स ऑफ एपिक और ट्रेजेडी इमिटेट्स द बेसर पार्ट ऑफ द सोल, दैट इज पैशन, बट दे शुड प्रोजेक्ट हीरोइज्म एज द मेन थीम, बट जनरली वो पैशन को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, द पोएट हु इमिटेट्स विदाउट नोइंग द रियलिटी इज ओनली शोइंग हिज लैक ऑफ पर्पस एंड नॉलेज. ओके, तो ये बहुत ही फेमस लाइन है जो रिपब्लिक में प्लेटो कह रहा है. देयर इज नो प्लेस फॉर सच अ मैन इन आवर सिटी, नॉर इज इट राइट दैट देयर शुड बी. We would send him away to another city, anointing his head with myrrh and garlanding him with wool. This is ironical. That we will get him out, we will get the poet out with full respect. तो ये जो anointing, garlanding कह रहा है, this is totally ironical. But we often misinterpret Plato. जो शेली ने भी कहा था, सॉरी नॉट शेली, सिडनी ने भी कहा था कि we often misinterpret Plato. Because Plato ने ये बताया था कि I want to banish those bad poets. Those bad poets, ठीक है, not all the poets, because Plato himself was a poet. Plato himself was a poet, right? So he is not against the genre of poetry, rather he is against these particular themes in poetry which are created by bad poets. ठीक है, तो याद करो पोप ने कहा था ना एक टर्म हैक राइटर्स. ठीक है, पोप ने इस टर्म को यूज किया था, हैक राइटर. तो हैक राइटर मीन्स दोज राइटर्स हु राइट्स a very cheap kind of story or poem just to make their profit. ठीक है, तो बेसिकली प्लेटो वांट्स टू बैनिश दीज हैक पोएट्स जो कि बुरी बातें लिख रहे हैं, which is not true, which is not the reality, and thus corrupting the mindset of the people. But he doesn't want to banish all the poets. Okay, he has applied censorship on the art form, and at the same time he is trying to banish the bad poets only, not all the poets. Okay. Good evening, Barsha. Welcome. Good evening, Shivcharan. Welcome. Acha, Shankar is saying, ma'am, is there any similarity between Plato and Aristotle? Is Aristotle supporting Plato? Um, Aristotle is not exactly supporting Plato, because Aristotle, in his poem, Aristotle is also talking about theory of imitation. Imitation के बाद दोनों ही कह रहे हैं mimesis, but actually Aristotle is focusing mainly on tragedy. एंड एरिस्टोटल का जो थ्योरी है वो एग्जैक्टली एरिस्टोटल ये नहीं कहा था कि प्लेटो को बैनिश करना है, सॉरी पोएट्स को बैनिश करना है. तो एरिस्टोटल का थ्योरी कंप्लीटली डिफरेंट है, विच इज एसोसिएटेड विथ ट्रेजेडी एंड अदर्स. एंड बेसिकली एरिस्टोटल इज नॉट अगेंस्ट पोएट्री इन दैट सेंस. जिस तरीके से प्लेटो बता रहे हैं उस तरीके से तो नहीं. ठीक है, वी विल रीड एरिस्टोटल टुमारोज क्लास, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. Okay, so that is about this. Now the major theme, the major theory of republic, that is imitation. The theory of imitation, that will be the last topic of today's class. ठीक है, so theory of imitation में क्या है? Theory of imitation में, this is very important part. Okay, so theory of imitation जो प्लेटो का मानना है, प्लेटो सेंट्रल स्टेटमेंट यही है कि पोएट्री इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. Okay,
So Plato has given this example कि thrice removed कैसे हो रहा है. तो Plato elaborates in with an example of couch or bed. ठीक है, एक पर्टिकुलर वुडन स्ट्रक्चर. तो प्लेटो कह रहा है कि देयर आर थ्री बेड्स. वन एग्जिस्ट्स इन नेचर, दैट इज द आइडियल इमेज. अनदर इज क्रिएटेड बाय अ कारपेंटर एंड द थर्ड इज क्रिएटेड बाय पेंटर और पोएट. तो दिस इज ट्रू. इसके साथ आप याद करो, मैंने आपको अभी पढ़ाया है लास्ट क्लास में सिग्निफायर सिग्निफाइड के बारे में. ठीक है, बाय फर्डिनांड द सेसोर. तो इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट. तो सिग्निफायर सिग्निफाइड में भी यही बात हमने कहा था. व्हाट सेसोर इज सेइंग दैट सिग्निफायर रेफर्स टू दैट आइडिया इनसाइड आवर माइंड एंड सिग्निफाइड रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर रेफरिंग टू. Right, so we have a tree, we have the idea of a tree inside our mind, that is signifier, and when we are referring to a particular tree concretely, that is signified. But Ferdinand de Saussure has also said that signifier and signified के बीच में जो relationship है that is arbitrary. ठीक है, मतलब ये जो हम एसोसिएट करते हैं कि ट्री, द वर्ड ट्री रेफर्स टू दिस ऑब्जेक्ट, तो ये लोग ने बनाया है, ये पीपल ने बनाया है, ये तो ओरिजिनली क्रिएटेड नहीं है. दीज आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी, दीज आर क्रिएटेड बाय वी ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो एक आर्बिट्ररी रिलेशनशिप है. तो ऑलमोस्ट सेम चीज है प्लेटो यहाँ पर कह रहे हैं कि बेड्स थ्री टाइप का होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, यहाँ पर प्लेटो ने बेड से समझाया है. तो one bed exists in nature, that is the ideal image, which means that is the signifier, that is inside our mind. कि whenever we talk about bed, we can visualize a structure which is very comfortable, on which we can sleep. There will be good decorations on that. ठीक है, तो बेड के बारे में हम सबको पता है. तो ये आइडियल इमेज है जो हम सबके दिमाग में है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनदर इज क्रिएटेड बाय अ कारपेंटर. जब हम दुकान में जाकर ये कहते हैं कि भाई मुझे एक बेड बना दो, तो कारपेंटर वुड्स को इस्तेमाल करके बेड बनाता है. सो दैट इज द सेकंड बेड. एंड द थर्ड बेड इज क्रिएटेड बाय पेंटर और पोएट, मतलब इन जनरल जो एक आर्टिस्ट बनाते हैं. Yes, yes, absolutely, absolutely, Jenny. Aristotle is empirical, practical, and commonsensical. Right. Good evening, Ritam. Welcome. तो created by painter और poet. ठीक है. तो अब प्लेटो कह रहा है कि while painting or while writing poetry on a particular bed, the painter or poet takes the carpenter's bed as his model, obviously. तो जब वो पोएट्री लिख रहा है तो वो कारपेंटर को देखकर लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो. अब कारपेंटर जब एक बेड को तैयार कर रहे हैं यूजिंग द वुड्स, देन दैट इज द इमिटेशन ऑफ आइडियल इमेज ऑफ अ बेड. एब्सोल्युटली. तो देखो, हम सबके दिमाग में बेड का एक इमेज है. ठीक है, अच्छा बेड को छोड़ो, आप टेबल समझो. सबके दिमाग में टेबल का एक इमेज है. बट इन दिस पर्टिकुलर क्लास, इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन आई एम सेइंग टेबल, आप सबके दिमाग में एक इमेज है टेबल का. बट जब मैं आपको टेबल कह रही हूँ इस क्लास में, तो आप सभी इमेजिन कर रहे हो टेबल, बट सबका इमेजिनेशन अलग अलग है. होना ही है, सबका इमेजिनेशन अलग अलग है. ठीक है, मतलब जो चीजें हमारे दिमाग में है, जो आइडिया हमारे दिमाग में है, आइडिया तो सेम है कि 4 लेग्स का टेबल होता है, एक वुडन स्ट्रक्चर होता है. बट आप में से कोई इमेजिन कर रहे हो राउंड टेबल, कोई इमेजिन कर रहे हो स्क्वायर टेबल, कोई इमेजिन कर रहे हो अपने घर का जो डाइनिंग टेबल है उसको. तो हर बच्चे अलग अलग आप इमेजिन करो. आई एम ऑल्सो इमेजिनिंग अ डिफरेंट टेबल, बट द आइडिया इज सेम. Idea is same. Okay, so that is the ideal image of a table which is there inside our mind. अब देखो, जब एक कारपेंटर बना रहे हैं टेबल, सपोज उसके पास कोई कैटलॉग नहीं है, उसके पास कोई जो टेबल ले रहा है उन्होंने कुछ स्पेसिफिक करके नहीं बताया, वो बस ऐसे बताया है कि भाई अब बना दो एक डाइनिंग हॉल में जिस तरीके का लंबा टेबल होता है उस टाइप का टेबल आप बना दो. अब कारपेंटर जब बना रहे हैं तो उसके दिमाग में क्या है, वही आइडियल इमेज है. उनको पता है कि डाइनिंग हॉल में किस टाइप का टेबल होना चाहिए. ठीक है, तो उसी इमेज को दिमाग में रखते हुए वो बना रहे हैं. बट ही इज नॉट मेकिंग सेम टू सेम एज द आइडियल इमेज, वो उसमें चेंजेस कर रहे हैं. ठीक है, कुछ अलग सा डेकोरेशन कर रहा है, अलग से टाइप का कलर यूज कर रहे हैं. तो कारपेंटर इज इमिटेटिंग द आइडियल इमेज.
ओके, नाउ द थर्ड इज क्रिएटेड बाय पेंटर और पोएट. अब जब एक पेंटर और पोएट लिख रहा है अपने पोएट्री में टेबल के बारे में, बेड के बारे में, तो वो अपने आंखों के सामने क्या देख रहे हैं? जो कारपेंटर ने बनाया है. उसी के घर में शायद एक बेड है जो कारपेंटर ने बना दिया है, उसी बेड को देखकर वो लिख रहा है. So Plato is saying that poetry is thrice removed from reality. Poetry is thrice removed from reality. So poet only knows the art of imitation, and therefore what we get in art is a distorted truth. तो इसी के कारण प्लेटो बहुत ही ज्यादा मतलब offended थी with the poets, because poetry is thrice removed from reality. So basically poetry is showing us distorted truth. वो truth से 3 कदम दूर है, 3 levels दूर है. Coleridge's idea may be associated with this idea. Coleridge's which idea, Shankar? Are you talking about primary and secondary imagination or any other idea? But which idea of Coleridge are you talking about? Okay, so हाँ, तो आप बताओ, then we will continue. So art is the distorted truth. Okay, so that is why poetry is thrice removed from truth or reality. Okay, Papri is saying if a cubist or surrealist painter will draw a picture of a table that will not match 100% with the table of carpenter, and so it will really be different from the real idea of table. Yes, Papi, you can say that. But surrealist painting is a different thing. Okay, उसके साथ आप एसोसिएट मत करना, बिकॉज सररियलिस्ट पेंटिंग में तो है ही ऐसी चीज की वो सभी चीज को डिस्टॉर्टेड तरीके से ही प्रेजेंट करते. यू कैन टेक एनी नॉर्मल पेंटिंग, बट सररियलिस्ट पेंटिंग हैज इट्स मीनिंग इन अ डिफरेंट वे. That is also talking about reality, modern reality, but in a very symbolic and complex manner. So it is not exactly in that sense thrice removed from reality according to me, because उसमें भी reality है, but वो reality बहुत complex तरीके से encoded form में दिया हुआ है. ठीक है, so not surrealist painting, but yes, you can take example of any other painting. अच्छा, secondary imagination. Secondary imagination. Secondary imagination is not exactly imitation. ठीक है, सेकेंडरी इमेजिनेशन में कोलरिज जो कह रहा है कि प्राइमरी, वी ऑल हैव प्राइमरी इमेजिनेशन and secondary imagination is only for the artists. Okay, and वो actually praise कर रहे हैं इसको. Coleridge is praising that secondary imagination. Okay, and Coleridge says that a poet or an artist has this kind of imagination through which they can present a very common thing in an uncommon fashion. तो ये एक extra talent है उनके अंदर. बट प्लेटो क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ठीक है, कोलरिज ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, कोलरिज ने इस एलिमेंट को प्रेज किया है कि यह सेकेंडरी इमेजिनेशन बहुत कम लोगों के अंदर होता है, एंड जिसके अंदर होता है वो जीनियस है. Right, so Coleridge has praised this, but Plato is not praising this. Plato is criticizing this, that poetry is thrice removed from reality, because poetry is not showing the reality. The poet is copying and copying and copying the reality, and in the third level we will find the distorted truth. But Coleridge जो कह रहा है उसमें distortion की बात नहीं है, उसमें तो creation of something new है. ठीक है, so describing some ordinary things in an uncommon fashion, that can only be done by the poets or by the artists who have this secondary imagination. ठीक है, तो वो exactly इसके साथ मैच नहीं है, बिकॉज प्लेटो का जो टोन है वो क्रिटिसाइजिंग टोन है, बट कोलरिज इज प्रेजिंग दैट एबिलिटी. ओके, यस, तो to understand the truth one needs to know the reality, and the path to reality is philosophy and reason. Plato is supporting philosophy, okay, not poetry and emotion. तो प्लेटो का ये कहना है कि ट्रूथ का जानकारी सिर्फ और सिर्फ फिलोसोफर को ही है. ठीक है, तो एलिगोरी ऑफ केव में भी उन्होंने सेम चीजें बताया था कि द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ द केव, ही इज द फिलोसोफर, ही इज द ट्रू मैन हु हैज ट्रू नॉलेज.
Okay, so only reality, only the path of reality can be shown by the philosopher, and using logic and reason. So poetry and emotion is far, far away from reality. ओके, सो दैट इज अबाउट प्लेटो सेंट्रल थ्योरी. तो इसमें और कुछ टॉपिक बाकी है, लाइक डाइजेटिक, माइमेटिक, इमिटेशन, एंड ऑल्सो यूजिंग सेंसरशिप इन आर्ट. सो वी विल डू दिस टॉपिक्स इन टुमारोज क्लास. Okay, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. So tomorrow at 8:30 p.m. we will complete Plato, and then we will talk about his student Aristotle. ओके, एरिस्टोटल के जो 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8:30 p.m.